I actually know to offer namaz, and most of I know 10 to 12 surahs. But since 3 days I'm listening to your lecture, and yesterday my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims, and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to the all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, देयर आर ब्लैक शिप इन अ कम्युनिटी. बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है. आप बिल्कुल सही कहते. इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू ताला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान. तो सलाह बहुत अहम है. तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह. सलाह इंपॉर्टेंट है. और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाअल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर. Yeah, thank you, sir.